ভারতীয় নাট্যজগতের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব হাবিব তানভীর সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত হল তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। তারই শুভ সূচনায় এসেছিলেন কিংবদন্তি অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ এবং রত্না শাহ পাঠক। দেখে নিন সেই ছবি। Last time I ever had any contact with Habib Sahab, I think it's about 20 years ago. I received a phone call from him. This is before mobile phones. And he said, Are Nasir, and he named a very big short producer of Bombay. वो मुझे एक फिल्म में काम करवाना चाह रहे हैं, तो मैं कितने पैसे मांगूं? मैंने कहा आप 10 लाख रुपए मांगिए. तो the phone nearly fell out of his hand, and I could sense his shock. He said, क्या बात है? नहीं ऐसा नहीं, सही बताओ. मैंने कहा नहीं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर उस आदमी को आपकी जरूरत है तो वो मतलब किसी भी कीमत पे, अगर वो आपके पास आया है, किसी भी कीमत पे आपको वो अमाउंट देगा, क्योंकि उनके लिए ये कुछ भी नहीं है. नहीं मैंने कहा आप कह के तो देखिए उससे. खैर 2 दिन बाद फिर हबीब साहब का फोन आया कि भाई मैं 5 मांगे मैंने, और वो 3 पे माना. I think this illustrates Habib Saab's attitude to life and this Richard producer's attitude to life. Habib Saab's theatre was like the clouds in the sky, and Habib Saab's theatre had the smell of the earth. पहली दफा मैंने ऐसे एक्टर्स देखे जो एक्टर लगते ही नहीं थे, जो लगता था कि उसी मिट्टी में हैं जिसमें वो पैदा हुए और जिसमें वो बढ़े और जिसमें वो पले. And I was literally moved to tears by that play. लालू राम थे उसमें, मदन लाल थे उसमें, फिदा बाई भी थी, और फिर उसके बाद मैंने पुनाराम का 2 परफॉर्मेंसेस देखे, जिसे देख के मैं बिल्कुल दंग रह गया कि एक अकेला इंसान बगैर किसी बैसाखी के, बगैर किसी मदद के, अकेला बैठ के एक तारा के साथ और एक चादर के साथ घंटों तक हमारा ध्यान खींचे रख सकता है. ड्रामा स्कूल की सारी लड़कियां तो उसको he's Indian Mick Jagger, because he was a very good looking man. He had a beautiful physique, he had long hair, and he had a fantastic presence, and it just said something much more to me than Al-Qazi's kind of theatre, or the kind of theatre जो कि दिल्ली में उस वक्त हुआ करता था. And I felt that maybe I have found my path, and this is much before I had even read Towards a Poor Theatre, और ग्रोटोव्स्की का नाम भी मैंने नहीं सुना था. लेकिन this I would consider Habib Saab's greatest gift to me and to people like me who love the theatre, that simplicity is the key. As Einstein said, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Those people who are coming here to pay tribute and talk about Habib are all dear friends of mine and also inspired by Habib Saab. So we are the next generation after Habib Saab, let us say. Habib is a person who needs to be relocated in today's time. This time is crucial for creative people. It is a challenge for creative people. And the challenge, the way he faced, is the biggest inspiration to all of us. As it was said, fighting fascism, he was attacked for these 3 days. You will come to know what
how he stood with me. I remember I was telling him something yesterday. Habib was a person who we made to walk with us to riot, hit lanes and by lanes. And my association with came for 35 years who worked together in Sardar Hashim Memorial Trust. He was our chairman till he passed away. So, a guide, an inspiration, a writer, poet, actor, music composer, activist. I remember when Sardar died and the statement he gave immediately after that, it's recorded in the book, that if this happens to the artist, then I think artists should take up weapons. I knew Habib Saab only as Uncle Habib, Habib Uncle, या हबीब साहब बाद में. मेरी माँ के बहुत अच्छे दोस्त थे. उनके साथ उनके घर जाया करती थी. उनके नगीन के साथ बहुत खेली हूँ मैं बचपन में. उनका जो माहौल था पूरा उसमें हम लोग घुमा करते थे. So I only saw him as my mother's dearest friend. बाद में जब फाइनली बड़ी हुई और उनके नाटक देखना शुरू किया, तब समझ में आया कि what this man has introduced to me is absolutely extraordinary. I grew up in Bombay. I traveled very little around the country. I knew a little bit about Gujarat and the theatres of Gujarat. But apart from that, मुझे कुछ नहीं मालूम था. तो जब हबीब अंकल के नाटक पहली बार देखे, चरणदास चोर पहली बार देखा, तो बिल्कुल ऐसा लगा कि ये कौन सी दुनिया है? ये मेरी दुनिया है. मैं इमीडिएटली कनेक्ट कर पा रही हूँ. लेकिन ये दुनिया से मैं इतने साल महरूम क्यों रही? कैसे रही? So for me, definitely, Habib Saab was an introduction to the potential of Indian traditional theatre. And his own modern way of looking at it, that is extraordinary. Like Safdar, he just makes you look at everything you know, everything you see each day, everything you think you've understood. Again, you look at it in a completely fresh way. Your eyes are opened and you are stunned by your new discoveries. Habib Saab was this one person who had this international kind of view, absolutely with very local, so here he was this internationalist. Here he was this really learned, I've learned so much about Western history from Habib Tanvir, sitting with him because he was the hero of my first film, and and that's the tribute I give as when they said, who would you take as Habib Tanvir? And luckily he said yes, So there's so many stories, and I think I made not such a good film. Right, I apologize to Habib Tanvir and somebody. But I became a better filmmaker after that because in my interaction because I was in Bombay and I'd met a certain set of people and wasn't that affected by them and didn't want to be that affected by them, and trying to find my own voice, and I made a pretty over dramatic angry film which I'm a little embarrassed by, except for that face of Habib Tanvir, which when it comes on screen, it's, you don't need to do anything, and there's a whole history in that face, আমার মনে হয় হাবিব তানভীর তো ভারতবর্ষের একটি মানুষ. তিনি যে ভাষায় থিয়েটার করে থাকুন না কেন, তার থিয়েটার দেখে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি, শিখেছি. তার থিয়েটার দেখে জেনেছি কী করে মঞ্চকে ব্যবহার করতে হয় আধুনিকভাবে এবং কিভাবে অভিনেতাকে নতুন একটা ভঙ্গিতে ব্যবহার করা যায়. তার রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছি. কিন্তু এটাই খুব আমার ভালো লাগছে, গর্বের বিষয় যে আজ তার জন্মশতবর্ষে এই প্রথম কলকাতা শহরে কিন্তু সেটা উদযাপন করছে. এই কিছুদিন আগে আরেকটি অনুষ্ঠান হয়েছিল হাবিব তানভীরকে ঘিরে. আমার যেটা মনে হয় যে এইটা কলকাতার একটা বড় গর্বের জায়গা. আমি কলকাতার সবচেয়ে সংস্কৃতি চর্চা করি, এখানেই বড় হয়েছি. আমার যেটা মনে হয় যে এইটা কিন্তু কলকাতার একটা বড় দিক এবং হাবিব তানভীরকে আবার নতুন করে পাঠ করতে হবে, নতুন করে বুঝতে হবে. তার থিয়েটারকেও বুঝতে হবে, তার রাজনীতিকেও বুঝতে হবে এবং তিনি কীভাবে থিয়েটারটা শুধুই তাকে একটা লোকনাট্যের মানুষ, সে লোকনাট্য লোক শিল্পীদের নিয়ে কাজ করেছেন তা নয়. তার লোকশিল্পীদের মধ্যে কীভাবে আধুনিকতা এনেছেন, কীভাবে রাজনীতি বোধ এনেছেন, এই জায়গাটাও খুব জরুরি. তার সারা জীবনের লড়াই কী ছিল,
কোন রাজনীতি নিয়ে তার লড়াইটা ছিল, তার মঞ্চ ভাবনা এবং শিল্প ভাবনা এবং রাজনীতি ভাবনা, এই সবটা নিয়েই আলোচনা করতে হবে। 3 দিনব্যাপী এই বিশেষ অনুষ্ঠানে থাকছে নাট্যোৎসব, প্রদর্শনী এবং প্যানেল ডিসকাশনের মতন বিভিন্ন বিষয়। এরকম বিভিন্ন আপডেটের জন্য চোখ রাখুন মিউজিক বাংলায়। এনজয় সারাদিন।